हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीब लड़की। मैं हूँ आपकी अनामिका श्रीवास्तव। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे सामने इतने डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल चीज़ें क्या रखी हुई हैं इन ग्लासेस में। एक्चुअली ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं। हम इन्हें चेक करके बताएंगे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो फर्स्टली उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सोल्यूशन तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ ले रखा है डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल। अब इसमें हम इसका सोल्यूशन बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसका एक सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसका सोल्यूशन तैयार हो चुका है। ये है कुछ एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर, जो कि हम अपने डेली चाउमीन वगैरह में यूज़ करते हैं। ये है बेकिंग सोडा। अब इसका भी सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। इसका भी सोल्यूशन तैयार हो गया। इसका थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और ये है लेमन जूस। इसके कुछ आप उसके सीड्स देख सकते हैं लेमन के। और जैसा कि हमें टेस्ट पता ही है, लेमन और विनेगर दोनों ही सार होते हैं टेस्ट करने पे। तो दैट्स मीन्स इनके अंदर कुछ ना कुछ एसिड कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये खट्टे होते हैं। सो अगर हमें पता करना है कि क्या एसिडिक है क्या बेसिक है, तो इसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। ये है ब्लू लिटमस पेपर। यू कैन सी इट इज़ ब्लू इन कलर एंड देर इज़ अनदर लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। एक्चुअली मेरी कुछ थोड़े से बेवकूफ़ी की वजह से गीला हो चुका है। आई थिंक अब देखना है कि ये वर्क करता है कि नहीं। So we will be checking whether the blue litmus paper is turning red while dipping in the acidic solution. So we will be checking it with the help of some vinegar and lemon juice. So for the lemon juice, I have taken a blue strip of litmus paper and I will be adding few drops of lemon juice over it. You can see it is blue in color. When I will pour some drop, you can see it changes its color from blue to red. So lemon juice contains acid in them. Now we will be checking whether acetic acid or vinegar is acidic or basic in nature. For this we will be using another strip which is blue in color. When I will dip this in the vinegar, you can easily check it is turning into red color. That means vinegar contains acid in them. Now we will be checking whether this baking soda solution is basic or not. For this we need few strips of red litmus paper, जो कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ख़राब हो चुका है। अब देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। I don't think it is working properly because you can see very little color, blue color in there is there. So I don't think it is working properly. So what to do now? So now try to check with another litmus paper whether it is turning that detergent solution to blue in color or not. So let's mix it well and let's try with the red litmus paper. Yeah, it is working. See, it changed its color from red to blue. That means detergent contains bases in them. So what if we pour in the baking soda solution? Firstly we mix it well. Yes, it is mixed now. So if we dip another red litmus paper into this solution, let's see what happened. See, it is changing its color
to slightly blue color. So we can say that baking soda also contains base in them. It is a weak, I think it is a weak base, or you can say it is a very mild base. That's why the color is not so prominent. But then in the case of detergent, you can see it is very prominent and it is very dark blue in color. So we have checked with the litmus paper. So now we will be testing with another natural indicator, which is turmeric. So for this we have to take the turmeric solution. For that turmeric solution I need to add some water in it. So see, it is yellow in color. When we pour this turmeric solution to the vinegar solution, no color change is observed. That means turmeric shows no color change in acids, while when we take some detergent solution, and we already know that it contains base in them, so when we pour some turmeric solution into the basic solution of detergent, you can see it is turning into red color. It is turned into blood red color. So that turmeric is our natural indicator which shows color in the basic medium, and it's turned the basic medium into dark red color. Suppose what happen if we pour this vinegar and turmeric solution into the solution. You can see that vinegar has reacted with the base present in the detergent, and it's trying to neutralize that, and that's why the color is changing from red to greenish yellowish color. You can see. If we add some vinegar into baking soda solution, it will be interesting to see that. Effervescence, you can see a lot of effervescence is coming out from the solution. So I hope you guys find these things interesting. I hope you like my videos. So guys, like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.